Hello students, how are you all? I hope you guys all are well. I'm your teacher Mona, and in our previous lecture we have discussed the nouns and the kind of the nouns, and today we will discuss the pronouns. So if you have discussed these nouns and pronouns in your previous years, and these are the very simple things, very simple parts of the speech, and when we talk about the noun, before starting the pronouns, I want to give you the overview of the pronouns. Sorry, nouns. So we have discussed the nouns, and now we have four kinds of the nouns, major nouns. We have proper noun, we have common noun, we have collective noun, we have a material or concrete noun, and we have the uh, abstract noun. So what are the proper noun? When we talk about the proper noun, that nouns refers to a particular place, person or thing that is called the proper noun. Common noun refers to common man, common place or common thing, and this is called the common noun. And collective noun refers to a group of things, group of people, and group of places. And the abstract noun is refers to a nouns that are not physically exist, that cannot feel, that cannot touch, like goodness, badness, fast, slow. These kinds of the nouns called the abstract noun, and material nouns called the, yeah, material nouns, or called, we can say, concrete noun, are can be easily physically exist and can feel and can touch, like board, table, okay, and any kind of the concrete material called the material noun. So we have four major types of the nouns. We have countable and uncountable noun. So the countable noun can be counted easily, like how many of you, and how many people, how many persons, how many things. So the things can be counted, called the counted noun, countable noun, and the things that cannot be counted called the uncountable noun, like here are the uncountable noun. Okay, here are the uncountable noun, and we can say that stars are the uncountable noun. So the things cannot be counted called the uncountable nouns. Okay, and now we will discuss the pronouns. So what are the pronouns? Okay, so we can say easily that pronouns are the word used at the place of the nouns called the pronouns. We have we have some major types of the pronouns. Okay, like we have I, we, you, they, he, she, it. Okay, these are the major types of the pronouns. Okay, and the pronouns, first person pronoun are what? Like first person pronoun, we have person pronouns means I or we. Okay, and what are the second person pronoun? Second person pronoun is the you, they, sorry, you, and third person pronoun are the they, he, she, or it. Okay, so these two pronouns, okay, I, we, called the first person pronoun. You is the second person pronoun, okay, and they, he, she, it are the third person pronoun. Okay, this is important thing. Now we have some personal pronouns, and the and different exercises. We can use the pronouns in the different way. So choose the right personal pronoun, like you and she should return the books to the library by tomorrow. Choose the right personal pronouns. So you need to choose the right personal pronoun. You and she. Her is not the correct. Okay, because her uh, is not the pronoun. Her uh, hers is called the possessive pronoun. Okay, but here we need to use the nominative case of the pronoun. So whenever we need to nominative case of the pronouns, we can use he, she, it, or they. Okay, we don't need to possessive case of the pronoun, and whenever we need to possessive case of the pronoun or object case of the pronoun, we can easily use the her or hers or our or ours. Okay, this is the important thing, and keep remember these things. So
you will be easily able to make your understanding with the pronouns. Okay, so pronouns are the important thing. Charan, just have a look of this. Next, Charan invited Rohan and Dash for the dinner. So Charan invited Rohan and I for the dinner. Here you cannot use me for the dinner because Rohan is the third person pronoun and it is used in the nominative case. So other person pronoun also you need to use in the nominative case, not the possessive case. So this is the important thing, that whenever you use two pronouns or the double pronouns or two or more than pronouns, so all the pronouns are in the same single case. Like if you use a nominative case pronoun, so all the pronouns will be in the nominative case, and if you are using the possessive case pronoun or objective case pronoun, so all the pronouns will be in the possessive case pronoun. So this is the important thing, and keep remember these things in your mind. Okay, now we have I watched and Sridhar and he play the game. We cannot use him. Okay, Sridhar and he play the game. Where are the tickets? I can't find. Where are the tickets? I can't find them. Them is the right answer because it is using in the singular case, but here we are talking about the plural case, so we can't, I can't find them. You and I look alike, don't we? So this is the nominative case pronoun, that's why you can use the you and I. So these photos are nice, have a look at. These photos are nice, have a look at them. Okay, them is the right. These eggs are rotten, now throw them away. Okay, throw them away. Objective, you need to use objective case pronoun. Okay, my grandmother, my grandmother and I spent a lot of time together. She called all her friends and invited them to the party. I don't know Ravi. Do you know him? Do you know him? Okay, so in the above examples, we have used the personal pronouns and the right personal pronouns. Okay, so this is the important thing, that you need to choose the pronouns and what kind of the pronouns we can use in the sentence, in any kind of the sentence is totally depend on your structure of the sentence. I always tell you that the structure of the sentence, the tense of the sentence is the important thing, like voices of the sentence, it is sending this, is the sentence is the active voice or the passive voice, and what kind of the sentence, what kind of this structure of the sentence, is this compound sentence or complex sentence. This thing is important. And one more thing, I will discuss all kinds of the sentence like compounds and complex sentences. I will discuss the active and passive voices, but just you have to wait, and after few days we will discuss the all these kind of the cases. Okay, so just you need to learn, and just you need to focus that what are you learning. This is the important thing, because what are you learning is going to set in your mind, is need to have to set your in your mind. This is the important thing, and you need to build up your basic understanding with all kinds of the things. Okay, so just keep remember. So these are the important pronouns, and pronouns are the simple, like we can say the grammar words I, he, she, they, you, it, me, him, her, called the personal pronouns. Okay, like we can say I, he, she, we, you, it, me, him, her, them, us, called the personal pronouns. Just underline this thing. Okay, what are the personal pronouns? We have subject pronouns like I, he, she, it, we, you, they are the nominative case pronoun or the subjective case pronoun. And objective pronouns me, him, her, it, us, you, them are the objective case of the pronoun. Okay, we use subject pronouns as the subject of the verb, and we use object pronouns as the object of the
verb and after the preposition. So you just need to just understand the basic structure of the sentences. Okay, now replace the nouns in bold with personal pronouns. Okay, you need to replace the nouns with the personal pronouns. Okay, so just to keep remember, the man has a car. Okay, the man never uses the car, and rewrite the sentence like replace the nouns in the bold with personal pronouns. Okay, so the man has a car, the man never uses the car, and rewrite the sentence like we need to just replace the man with the personal pronouns. Okay, so what we can say that the man, we can say that he, okay, he has a car, he has a car. Gopal saw an old lady on the road. Gopal helped the old lady cross the road. Okay, so uh, just you need to here just write this. The man has a car who never uses the car. So you need to just change the bold noun with the personal pronoun. So you can use who. Okay, the man मतलब जिसके पास कार है उसने उस कार को कभी यूज नहीं किया. The man has a car, he never used this car. Who has never used this car या who never used this car, you can say everything, anything. Okay, and we can say he never uses this car. Gopal saw an old lady on the road. Just write first sentence as it is. Okay, plus he. You can cannot use Gopal again and again. It is looking weird. So just um, when the subjective pronoun and when your noun is repeating in the same sentence, you need to replace that noun with the pronoun. So Gopal saw an old lady on the road. Plus अब आप क्या करेंगे? He. Okay. Use he at the place of the Gopal. He helped the old lady cross the road. Okay, now Veena has a bicycle. First sentence as it is. Plus she. Veena is a female. That's why you can use she is riding the bicycle. This is the simple thing. Okay, you can write the sentence as it is after that. Mr. and Mrs. Nair have got 3 children. Okay, Mr. and Mrs. Nair have got 3 children. So just write first sentence as it is. Now you can replace Mr. and Mrs. Nair with the they. Okay, they have put the 3 children, 3 children in a big school. Okay, so just you need to understand, you need to try to understand that how can we replace the nouns with the pronouns. Okay, and why we used they here at the place of the Mr. and Mrs. Nair, because Mr. and Mrs. Nair is the plural pronoun. Okay, 2 persons are included here, it is not the single person. That's why we used the they at the place of the Mr. and Mrs. Nair. So next हम लोग के पास में है couple and I are talking a camera to the zoo. Okay, so just write the first sentence as it is. Next, you can replace couple and I with the we. Okay, why we are using we here? Because this noun included I, and whenever I included in any kind of the noun, the noun will make the we. Okay,
तो जब भी आपका आई जो है इंक्लूड रहेगा किसी भी नाउन में, तो वो नाउन किससे डिनोट हो जाएगा, वी से डिनोट होगा. ओके, एंड जस्ट राइट द रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज. We will make, we will take, we will take pictures with the camera. Now, you and your brother are weak at English. So you can say you and your brother are weak at English. Just write first sentence as it is. Then you say you and your brother should improve your English. Okay. So how can we replace this noun with the pronoun? Both of you. We can say both of you should improve your English. So why we use both of you here? Because we cannot use we here because I is not included. You and your brother, and he's talking to a second person. So we cannot use they at the place of the you and your brother. They should improve your English because they is the third person pronoun. So we need to use second person pronoun, and for the second person pronoun we cannot use single you because your brother is also included, so we can use both of you. Okay, we can use both of you should improve your English. This is the important thing. Okay, and this is the common sense that how can we use and how can we fill the gap, how can we make the sentences. This is the basic understanding with the sentences. Okay, so just to keep remember these things, and whenever you want to make the sentences and whenever you want to speak any kind of the sentences, you just need to understand that how can we converse in English, so it will be helpful for you. So let's start to another example. Let's have a look of the another example. Like we have, when Meera saw Arun, Meera asked Arun how Arun was. Yeah, now you need to change Meera and Arun with the pronouns. Okay, so just try to understand that how can you change the pronoun. Okay, so when Meera saw Arun, Meera asked Arun how Arun was. So just write when Meera saw Arun. Okay, now used she at the place of the Meera. Okay, she asked him at the place of the Arun. She asked him how he was. Now we have used he at the place of the Arun. How we cannot use how him was because him is the objective case pronoun and he is the subjective case pronoun, and you need to understand that where you can use subjective case pronoun and where you can use the objective case pronoun. This is the important, okay, and basic thing. Now just have a look of the another example. It is Priya's birthday. Okay, Radha and I are going to give Priya a surprise. So you can say, just write the first sentence as it is. Okay, plus Radha and I. So I is included so that we can use we. Now just write the remaining sentence. We are going to give her. Now we used her at the place of the Priya. A surprise. Okay, just try to understand. Now the words yours, mine, hers, his, theirs, ours is indicate the possession. Okay, as I told you, what are the possession, possessive pronouns. So these are the possessive pronouns. Your, mine, ours, hers, theirs, him are called the possessive pronoun. So now you need to understand that
what are the possessive pronoun and in what kind of the situation we can use the possessive pronoun. Okay, so just have a look. Fill in the blanks with suitable possessive pronoun. Just have a look of this exercise. This laptop is mine. I bought it last month. Why we used mine? Because it is the possessive pronoun. Okay, and we need to use possessive pronoun in these sentences. Okay, we cannot use a hers or him here or his here because it is the first person pronoun. So for the sentence is first person pronoun, so we need to use the first person uh, possessive case pronoun. Okay, so just keep remember and just focus on the structure of the sentence, noun on the sentence, verb on the sentence. This is the basic thing. Okay, now this umbrella is, now just to have a look of this subject, now this umbrella is hers. ओके, शी lent it to me just now. ओके, मतलब ये जो अम्ब्रेला है ये उसका है और उसने ये मुझे अभी उधार दिया है. ठीक है, तो यहाँ पर शी का यूज हो रहा है, हमारा थर्ड पर्सन का यूज हो रहा है एंड पॉजेसिव प्रोनाउन शी का क्या होता है हमारे पास में, हर होता है. ठीक है, हर्स होता है. दैट्स वाई हम लोगों ने क्या यूज किया है यहाँ पर, हर्स यूज किया है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे द फॉल्ट इज डैश. आई शुड नॉट हैव वेस्टेड सो मच टाइम. तो जो गलती है वो किसकी है भाई, द फॉल्ट इज माइन. ओके, ये गलती जो है मेरी है. आई शुड नॉट हैव वेस्टेड सो मच टाइम, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया. ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया. कैन आई बोरो योर्स, मतलब वो किसी से बात कर रहा है और कह रहा है कि मैंने अपना पेन जो है वो कल खो दिया है, क्या मैं तुम्हारा ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर्स. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीजें जो है समझ में आ रही हैं. पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, प्रोनाउंस क्या है, ये आपको समझ में आ रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क आई विल हेल्प यू टू फिनिश योर्स. ओके, मतलब वो बात कर रहे हैं ऐसे कि जैसे ही मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूंगा तो मैं जो है तुम्हें भी हेल्प करूंगा तुम्हारा होमवर्क फिनिश करने में. ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क है इसीलिए क्या यूज करेंगे, योर्स. ओके, नेक्स्ट, आवर किचन इज वेरी क्यूट. ओके, हर फर इज सो सॉफ्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हर यूज कर रहे हैं, मतलब हमारी जो किचन है वो बहुत ज्यादा क्यूट है और उसके फर जो है वो बहुत सॉफ्ट हैं. ठीक है, रंजीत लॉस्ट हिज वॉलेट यस्टरडे. कुड दिस वॉलेट बी हिज, मतलब रंजीत ने अपना वॉलेट जो है वो कल खो दिया है. क्या ये वॉलेट उसका हो सकता है, मतलब उनको एक वॉलेट मिला होगा और वो इस तरीके से बात कर रहे होंगे कि रंजीत जो है उसने अपना वॉलेट कल जो है खो दिया है, तो क्या ये वॉलेट उसका है, कुड दिस वॉलेट बी हिज, और we cannot use either him. Okay, so just to use possessive case pronoun. The red car is theirs. The red car is theirs. They bought it last week. मतलब जो रेड कार है वो किसकी है, उनकी है, और उन्होंने उसको कब खरीदा था, लास्ट वीक खरीदा था. ठीक है, she made an old friend of her, ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर्स एट दी मॉल, मतलब वो अपने किसी पुराने दोस्त से मॉल में मिली. ठीक है, हर्स का यूज हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये कैसा है आपका, फीमेल है, इसलिए हम लोग हर्स का यूज करेंगे. दिस पार्किंग स्पेस इज माइन या आवर्स. दिस पार्किंग स्पेस इज आवर्स, वी हैव पेड फॉर इट, मतलब ये जो पार्किंग स्पेस है हमारा है और हमने इसके लिए पे किया है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है यूज कर सकते हैं पॉजेसिव केस प्रोनाउन को. तो आई होप आप लोगों को पॉजेसिव केस प्रोनाउन समझ में आ रहे हैं, मतलब पॉजेसिव केस प्रोनाउन का मतलब क्या है. ठीक है, पॉजेसिव केस प्रोनाउन का मतलब ही ये होता है कि आप
पोजीशन दिखा रहे हो किसी भी चीज पर, मतलब कि ये पेन मेरा है, ये कार तुम्हारी है, ठीक है, ये बुक उसकी है, ठीक है, ये बाइक जो है उनकी है। तो जब हम किसी भी चीज पर जब कोई पोजीशन दिखाते हैं, तो पोजीशन मतलब कि पोजीशन ऐसे नहीं कि सिर्फ कब्जा दिखा रहे हैं, डायरेक्ट कब्जा दिखा रहे हैं, हम और भी तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब हम जहाँ से कोई जब हम ओरिजिनेशन दिखाते हैं कि कोई चीज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो वहां पर भी हम लोग पजेसिव केस का प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। तो पजेसिव केस प्रोनाउंस के यूजेस बहुत सारे हैं। अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ छोटे यूजेस दिए हुए हैं, लेकिन आप जब लैंग्वेज में अपना आगे बढ़ोगे तब आपको बहुत सारे यूजेस इसके जो है देखने को मिलेंगे। तो ये पजेसिव केस प्रोनाउंस के यूजेस हैं, ठीक है, और आप इनको बहुत ब्रॉड वे में यूज कर सकते हो। तो जब किसी भी टाइप का पोजीशन दिखाएंगे, ओरिजिनेशन दिखाएंगे किसी भी आइडिया और फीलिंग का, किसी भी चीज का, तो वहां पे हम लोग पजेसिव केस प्रोनाउंस का यूज करेंगे, ठीक है। और पजेसिव केस प्रोनाउंस कौन कौन से हैं ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिया हुआ है। The words myself, yourselves, himself, herself, themselves, ourself, itself are the reflexive pronoun। मतलब वही possessive case pronoun में जब आप reflexive लगा देते हो, मतलब आप लोग selves लगा देते हो, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके possessive case pronoun हो जाते हैं। ओके, तो just keep remember all these things। Just have wait for a minute। Now we have some more examples। Wait for 2 minutes। Okay, problem is solved। So complete the passage with the reflexive pronoun। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग पजेसिव केस प्रोनाउन में ही हम लोग क्या लगा देते हैं, सेल्फ्स लगा देते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउंस हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, सो कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद रिफ्लेक्सिव pronouns। Okay, yesterday my brother and I went to the market to get some groceries। I It had rained a lot, so the ground was marshy on the way home। My brother fell down and hurt himself। Okay, hurt himself, and I cut myself। ओके, जस्ट कीप रिमेंबर कि हम लोग को हिमसेल्फ कहाँ यूज करना है, माई सेल्फ कहाँ यूज करना है। हिमसेल्फ हम लोगों ने वहां यूज किया क्योंकि वो अपने भाई के बारे में बात कर रही है, तो हिमसेल्फ का यूज होगा। यहाँ पे हम माई सेल्फ का यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो यहाँ पर अपने बारे में बात कर रहे हैं। आई कट माई सेल्फ ऑन सम ब्रोकन पीसेस ऑफ द ग्लासेस। ओके, when we got home my cousins were in the garden enjoying themselves। Okay, enjoying themselves। They saw us and said, look at yourselves in the mirror। Yourselves in the mirror। So just need to understand that how can we use himself, myself, herself। तो जब भी I का जब हमें रिफ्लेक्सिव बनाना होगा तो हम myself बनाएंगे, he का रिफ्लेक्सिव himself होगा, they का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, themselves होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने themselves का यूज ही इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पर उसके कजन्स की बात हो रही है, थर्ड पर्सन में बात हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने themselves का यूज यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। they saw us मतलब उन्होंने हमें देखा और हमसे कहा look at yourselves मतलब आप लोग अपने आप को किसमें देखो, मिरर्स में देखो। We went in at once and looked ourselves। ठीक है, अब वो अपनी बात कर रही है, तो वो बता रही है कि हमने अपने आप को किसमें देखा, मिरर में देखा। We had a lot of mud on our faces and perhaps it had splashed on our faces when we fell in the marsh। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउंस को जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें complete the conversation with the suitable pronouns reflexive और emphatic। ठीक है, तो reflexive pronouns को हम लोगों ने पढ़ा, साथ में आपको क्या दिया हुआ है, emphatic pronouns भी दिया हुआ है। तो emphatic pronouns क्या होते हैं, जैसे कि जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है उन्हीं को हम लोग एज ए एम्फेटिक प्रोनाउंस भी
यूज कर सकते हैं, मतलब कि जब आप उसी सब्जेक्ट पर मतलब ही को और ज्यादा एम्फेसिस करना चाहते हो तो हिमसेल्फ का यूज करोगे, दे को अगर आप एम्फेसाइज करना चाहते हो तो आप देमसेल्व्स का यूज करोगे। तो जस्ट डिपेंड ऑन द structure of the sentence. Okay, so just keep remember these things. Now, just have a look of this conversation. Mona, bye mom, we are going to Amar's birthday party. Bye. Enjoy yourselves. Okay, enjoy yourself. तो यहाँ पर एक मोना के बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने उनकी मॉम ने क्या कहा, enjoy yourself सेल्फ्स चिल्ड्रन, एंजॉय योर सेल्फ्स चिल्ड्रन। ओके, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है इसीलिए योर सेल्फ्स आ जाएगा। हैव यू बॉट अ गिफ्ट फॉर अमर? Mona, yes, I have bought a pencil box for him. I have also made a greeting card for him. Okay, so I also have made a greeting card for him. So you don't need to emphasize here him or himself again. Just इनको जो है आप लोग इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। Mom, good. Will you be going out too? Yes, I am planning to go shopping to buy himself some new clothes. Dad wants to buy himself, मतलब डैड जो है वो अपने लिए क्या खरीदने वाले हैं, पेयर ऑफ शूज खरीदने वाले हैं। ठीक है, आर यू टेकिंग रूबी अलोंग? क्या रूबी को तुम साथ में ले जा रही हो? तो मॉम कहती है नो, शी विल बी टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, मतलब वो अपना ध्यान खुद रख लेगी। ठीक है, बाय मॉम, बाय, हैव अ गुड टाइम, बट बिहेव योरसेल्व्स। ओके, बट बिहेव योरसेल्फ, यहाँ पर सिर्फ होना के बारे में बात हो रही है तो वो क्या कहेंगे, बट बिहेव योरसेल्फ। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन और इनको यूज कर सकते हैं। द वर्ड्स ऑल, एनीबडी, समवन, एनीथिंग, ईच, एवरीथिंग, एवरीवन, नोबडी आर कॉल्ड द इंडेफिनिट प्रोनाउंस, बिकॉज यहाँ पर ईच, एवरीबडी, एनीवन, एनीथिंग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन या को रेफर नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि किसको रेफर किया जा रहा है। तो जब समबडी, एनीवन इनको रेफर किया जाता है, पर्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं किया जाता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास में इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देयर इज समथिंग, you can say something, okay, on your nose, something on your nose. So someone has, यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, indefinite, someone has taken my dictionary, मतलब किसी ने मेरी डिक्शनरी ले ली, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। I think at home is asleep, it is so dark, so I think someone at home is asleep, it is so dark, मतलब उसे ऐसा लगा कि वहां पर कोई सोया हुआ है जो उसकी उसे दिखाई नहीं दे रहा। There is no one, मतलब वहां पर इंजर्ड की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई कैन ट्रस्ट, मैं ये जो वर्क है खुद से कर लूंगा। आई कैन ट्रस्ट एनी वन, आई कांट ट्रस्ट एनी वन, ओके, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। डज, मतलब क्या वहां पर कोई रहता है? जो डज एनी वन लिव्स इन दिस हाउस, यू कैन सेंड दिस मैसेज थ्रू समवन, मतलब आप ये मैसेज को किसी के थ्रू भेज सकते हो। इट वॉज रेनिंग सो, मतलब वहां बारिश हो रही थी, सो समवन केम टू द मीटिंग, मतलब वहां बारिश हो रही थी तो कोई वहां पर मीटिंग के लिए आया। इफ ही कैन डू इट वी विल आस्क समवन एल्स, ओके, मतलब कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो किसकी हेल्प लेंगे, किसी और की हेल्प लेंगे। ओके, आई एम टू टायर्ड टू कुक टुडे, लेट्स बाय समथिंग, मतलब वो बहुत ज्यादा टायर्ड थी कुछ बनाने के लिए, तो उसने क्या बोला, लेट्स बाय समथिंग फ्रॉम अ रेस्टोरेंट। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज भी कर सकते हैं। द वर्ड्स हु, हुज, वेयर, हुम, ये भी जो है आपके रिलेटिव प्रोनाउन है और इनका यूज भी आप कर सकते हो।
और ये इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है। द चिल्ड्रन who shouted in the class were punished. Okay, this is the boy whom the doctor cured. Okay, do you know anyone who can fix my computer? मतलब आप या किसी को जानते हो जो कंप्यूटर फिक्स करे? Can I talk to a man who is sitting here? I ate all the cookies that you gave me. Okay, what the person to whose to whom you sent the parcel, मतलब आपने जिस आदमी को पार्सल भेजने के लिए यूज किया है वो किसी दूसरे घर में चला गया है। आई डोंट लाइक पीपल हु टेल लाइज। ओके, प्लीज रिटर्न द बुक whose you borrowed yesterday. I the driver didn't see the car which was coming. Okay, on the opposite side, the students makes were low had to attend. The students whose marks were low had to attend the remedial class for the school. And combine the sentence with the relative pronoun. You can combine the sentence like the hotel was in the center of the town, which was, so आप यहाँ पर which के use कर सकते हो at the place of the noun, which was demolished for road winding. She is the girl who won the gold medal. He is the man whose son. Okay, you can use whose son. And this is the house that grew up here, or which grew up here we can use. Okay, and you sent me a present. Thank you very much for the present. So you sent me a present. Thank you very much for that. Okay, you can use that at the place of the present. तो अब आप लोगों को एक और पैसेज है जिसके बेसिस पर आप लोगों को प्रोनाउंस को जो है अंडरलाइन करना है। तो ये जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग अंडरलाइन करिए। और हम लोग आज की क्लास को यही रैप अप करते हैं। मिलेंगे कल अपने न्यू लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।